Kushal Sharma has 13 years of experience and is an expert in the Hadoop ecosystem, including MapReduce, Spark, Hive, and he has also पर वो केवल इतना ही कर सकती है कि वो कपड़े धोए। वेरी सिमिलर वे जो ऑटोमेटिक वैक्यूम क्लीनर है वो भी स्मार्ट। तुमने कहा कि तुम्हें कुछ काम करने में मन नहीं लग रहा था और तुम्हारी बात नहीं हो रही। Yes. There is no correlation for the first, second, third, nothing. Then whatever the data available from the data they have to extract and give the every time different answer. So the same question. हाँ, yes. Doesn't have result. हाँ, तो इसमें केसेस क्या हो सकते हैं? डिफरेंट आंसर दे सकते हैं। First initial, first iteration, second iteration, third iteration, up to 10 iterations sometimes. The discriminator is identifying with the fake names. After some time, while improving with the start with the session, we talked about how transformers work and how they are changing the working of artificial intelligence, that is generative AI, how transformers are helping in generative AI to get developed and to bring the state of the art output that is what we expect. So to begin with, from the first day, second, and today's third day, a lot many topics are already covered related to AI, machine learning, and similar topics. So to begin with, I will start with NLP because somewhere down the line we talk about transformers. So NLP domain that is there, the domains where NLP approaches are being used, transformers are helping there extensively. And in your daily life, in most of the scenarios, NLP is used. So to begin with, let us discuss basic what is NLP. Natural language processing. Many of you must be aware. So, as a human being, we are very much comfortable to interact with people. बहुत ही ज़्यादा comfortable है interact करने में कि जो language में बात आती है, whether it is Hindi or whatever specific language that you for people who even know, so we can simply communicate. But when it comes to a system or a machine, so it becomes very much difficult. Because a machine is not a human, and we know that humans have limitations, right? The fact is that humans have a very good capability in their brains, but still they have some limitations. What limitations humans have is that we can't continuously keep on working. We need some time to rest. But if I talk about machines, they can keep on processing the data. And parallel processing is one concept. They can keep on doing that. So here, the thing is, humans have limitations and machines are not. To make things very easy in daily life, machines are used, whether it is a motorcycle or whether it is mobile phone or whether it is a digital watch or any other gadget that we have. So it is helping us to reduce our daily tasks, daily work, because machines are there, gadgets are there. So we want whatever work a human is doing, that should get transferred to machines so that it is very easy for us. Like we have cars and automobiles are there, motorbikes are there. They help us to mobilize from one place to another. And that is why we are able to consume the energy so that we can utilize that energy in other tasks. What happens if you have to run 10 kilometers and come to your job place? What will happen? All the energy is already drained, or half of the energy is drained. So the meaning is machines are used right from the starting so that the human efforts are reduced.
That is the main objective. Here, NLP is helping in the same manner, wherein we are trying to communicate with machines and just the way we do with humans, because we expect something from them. हम इंसानों से कुछ expect करते हैं, जैसे आप अपने neighbor से सुबह मिले तो आप उनको greet करो, good morning, नमस्ते, तो सामने से भी कुछ response आएगा, and you expect कि कुछ response आए. Machines में कैसे होगा? क्योंकि machines की जो language है, they are very different. Binary language is there, combination of 0 1 is there. So in a human language it is not possible. But because of NLP, that is almost from 40-50 years, NLP is there, and researchers, scientists, they are keeping very much entangled to discover more and more capabilities that NLP can help. So we will be talking about it, and just the way a human is able to interact, we can interact with machine nowadays. If you simply open your mobile, you have Google assistants, right? You have Siri is there, Amazon, Alexa is there. So these kind of models are there already. Even ChatGPT can help you with that. So how that is possible? Because you can speak in any language and machine can understand that input, and accordingly within 2-3 seconds it can give you the output. This is the NLP approach that has been applied at the back end. So let us understand how. So a small child, how the understanding of language gets developed, let us talk about that. So एक छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स से कई बार एक ही चीज़ पूछता है, जैसे if the child sees something is flying in the air, तो बार बार पूछता है. ऐसा नहीं है कि 3 साल का बच्चा है उसको पूछा कि वो क्या है, एंड पेरेंट्स टोल्ड कि वो एयरप्लेन है और उसको समझ में आया. ऐसा नहीं. द चाइल्ड विल कीप ऑन आस्किंग मल्टीपल टाइम्स, तो उसके दिमाग में पैटर्न बन जाएगा कि दिस इज एन एयरप्लेन एंड दिस इज अ बर्ड, डिफरेंस है. तो वो जो अंडरस्टैंडिंग है, वो जो कम्युनिकेशन है एक ह्यूमन का दूसरे ह्यूमन के साथ, तो सेम चीज़ वी कैन आस्क मशीन एज कि इफ दिस इज द समरी, this is the paragraph, तो इसका मुझे समरी दो, then 4-5 lines. तो NLP can help you. The GPT model that is there, ChatGPT, तो वहाँ पे भी NLP is extensively used. क्यों? क्योंकि हम human language में interact करते हैं. हम ChatGPT से पूछ रहे हैं कि when is Republic Day of India, मतलब we can ask anything. We can even ask कि आज मुझे just lightly कुछ खाना है, तो suggest me something that is healthy, तो सजेस्ट करें. वो पूरा प्लान भी आपको सजेस्ट कर सकता है कि व्हाट शुड बी माय डेली रूटीन अगर मेरा जॉब 9 to 5 है. यू कैन आस्क एनीथिंग एंड वो आपको आउटपुट देगा इन इंग्लिश और हिंदी, बिकॉज एनएलपी इज ऑब्वियसली जीपीटी इज द ट्रांसफॉर्मर जो हम पढ़ेंगे, एंड एनएलपी इज ऑल्सो. Then we have a multi-database integration like Oracle, MySQL, then PostgreSQL, and many more. Then we have a real-time analysis of our data. Then powered by our database platform. Then we have a cloud on-premises, like we have flexible infrastructure information like that. We have a cloud premises on-premise, and we have also affiliated with AWS. Then let's come towards our flagship conversation AI solution. Our first conversational AI solution is indeed inspiring. Then here we connect the different various contact info and follow. Then we have enterprise grade security for our chatbot. Then we have discrimination on the basis of something which हो सकता है. So here it is said that AI bias refers to systematic and unfair discrimination in the output or AI output that arises from prejudiced training data, flawed model design, or real-world societal inequalities. तो biasness, discrimination तीन चीजों से हो सकता है. पहले जो डेटा यूज किया गया है मॉडल ट्रेन करने के लिए, वो उनका वही उनमें बायस है, उसमें ही किसी एक
एक क्लास को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। फिर फ्लॉड मॉडल डिजाइन, यानी कि जो मॉडल बनाया गया है वो ठीक तरीके से ट्रेन नहीं किया गया होगा, जो पैरामीटर दिए गए हैं ट्रेन करने के लिए वो नॉट सफिशिएंट, या फिर जो ऑप्टिमाइजेशन रन किए गए हैं मॉडल में वो भी बेसिकली उस लेवल के लिए हुए जहाँ पर दो क्लासेस दो कैटेगरी को इक्वल ट्रीट करें। तो ये तीन चीज़ें हैं, मेजर तीन चीज़ें हैं जो किसी भी मॉडल को AI के आउटपुट को बायस बना सकता है, डिस्क्रिमिनेटिव बना सकता है। ठीक है, देन व्हाई इट मैटर्स, इसमें एक मैं रिसेंट एग्जांपल दूंगा, थोड़ा सा रिलीजियस एग्जांपल है। नाउ व्हाट हैपेंड यस्टरडे, वन ऑफ माय स्टूडेंट, उनको हमने समझ में नहीं किया था, उसने चैट से क्वेश्चन पूछा, आई डोंट नो उसको मालूम क्या है, उसने पूछा, उसका स्टेटस रखा था, and the question was, hi ChatGPT, if you were human, which religion would you have followed? ऐसा उसने ChatGPT को पूछा, और ChatGPT ने, and basically she belonged to Buddhism, ठीक है? So ChatGPT ने भी उसको वही आंसर किया कि if I would have been human, I would follow Buddhism because of this qualities this religion has got. तो ये कैसे हो गया? यानी जो वो रिलीजन फॉलो करती है उसके बारे में ही उसको उसने रेकमेंड किया और उसकी क्वालिटीज बताई। व्हाई दिस हैपेंड? बायसनेस होगी ना, क्यों बुद्धिज्म को हम लोग नहीं कर पाते? व्हाई शुड दिस हैपन? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बहुत ही लॉजिकल आंसर दो, तो क्यों हो सकता है? जिस डेटा को ट्रेन हुआ, जैसा उसका कन्वर्जेशन रहा हो, मैंने उसकी वजह से किया है, क्योंकि जब मैंने उसका स्टेटस देख के क्वेश्चन पूछा तो वो न्यूट्रल था, उसने बोला अगर ये प्रिंसिपल फॉलो करना चाहते हो तो ये रिलीजन को, ये करना चाहते हो तो ये रिलीजन को, ठीक है? सो दिस इज व्हाट बायसनेस कम्स फ्रॉम, लाइक डेटा की वजह से बायसनेस है ना, वो एक रिलीजन के लिए बायस होता है, सो दैट्स नॉट हैपनिंग। सो व्हाई इट मैटर्स, बायस AI can reinforce stereotype, cause harm to individuals or groups, or perpetuate historical inequalities. तो अब हम लोग AI मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए पास्ट डेटा यूज करते हैं, और उस पास्ट हिस्टोरिकल डेटा में बहुत सारे ऐसे रॉन्ग प्रैक्टिसेस भी उनको फॉलो की जा रही हैं। यानी पहले फीमेल से ज़्यादा मेल जो लोग होते हैं उनको रेकमेंड किया जाता था, उनको ज़्यादा एम्फसाइज किया जाता था। अगर ऐसा डेटा मॉडल को देंगे तो मॉडल बायस होगा, जेंडर बायस हो जाएगा, राइट? तो हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज भी वहाँ पे आ जाती है। नाउ टाइप्स ऑफ AI बायस, तीन टाइप के हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले इज डेटा सेट बायसनेस, which comes in occurs when training data does not accurately represent the real world population. यानी एक्चुअल में जो चीज है वर्ल्ड में या फिर जो पॉपुलेशन सैंपल डेटा है उसमें हर एक को इक्वली रिप्रेजेंट ही नहीं किया जा रहा है, इस वजह से डेटा सेट बायसनेस आ सकती है। और यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कुछ, जिसमें फेशियल रिकग्निशन ट्रेन मोस्टली ऑन लाइटर स्किन इंडिविजुअल एंड दैट फेल्स ऑन डार्कर स्किन फेसेस। तो यानी कि हमने मॉडल को ट्रेन किया जहाँ पे हमने कुछ फेसेस दिए मॉडल को, कुछ लाइटर स्किन फेस और कुछ डार्कर स्किन फेस। तो मॉडल डार्कर स्किन फेस है वहाँ पे भी फेल हो रहा है, डार्कर को वो लाइटर स्किन वाला बोल रहा है। व्हाई? बिकॉज जो डेटा है, ट्रेनिंग डेटा उसको दिया गया है, इट इज इम्बैलेंस्ड। अब कल की डिस्कशन में हमने आपको बी सेफ का मॉडल दिखाया था जहाँ आपको ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर रहा था, उसने ग्लासेस पहने हैं या नहीं पहने ये उसको डिटेक्ट करना है, और उसके लिए हमने 2500 से ज़्यादा इमेजेस दिए थे। अब इमेजेस कैसे होंगे? कुछ ने ग्लासेस पहने होंगे, कुछ ने ग्लासेस नहीं पहने होंगे। तो अगर आपको मॉडल से करेक्ट आउटपुट चाहिए तो वहाँ पे इक्वालिटी होनी चाहिए, बैलेंस डेटा होना चाहिए, राइट? यहाँ पे भी वही बोला गया है। देन लैंग्वेज मॉडल शुड बी ट्रेन्ड ऑन biased internet content may generate racist, sexist or culturally insensitive responses. तो यहाँ पे हम
जनरेटिव मॉडल्स की बात कर रहे हैं, लैंग्वेज एलएलएम्स की बात कर रहे हैं, कि अगर उनको इनडायरेक्ट डेटा दिया गया या फिर पूरा डेटा नहीं बताया गया तो कुछ कल्चरली इंसेंसिटिव रिस्पॉन्स दे सकता है, रेसिज्म हो सकता है वहाँ पे, तो वो एक्चुअली नहीं होना चाहिए। फिर कॉज क्या है इसका? अंडर रिप्रेजेंटेशन और ओवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्टेन ग्रुप्स या फिर बायस डेटा कलेक्शन मेथड कैन बी वन थिंग। Now, the second biasness should can become or arise, could be arise due to algorithmic bias. Now, the algorithmic bias क्या होता है? It occurs when the model's logic or optimization criteria inherently favor one group over another. यानी कि आपके मॉडल का लॉजिक कुछ ऐसा है, आपने ऑप्टिमाइजेशन इस तरीके से की है, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कुछ इस तरीके से की है कि वो किसी एक ही ग्रुप ऑफ क्लास को या कैटेगरी को फेवर कर रहा है, जो पूरी तरीके से गलत है। ठीक है, तो आपका मॉडल कैसा होना चाहिए? जनरलाइज होना चाहिए। ठीक है, जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है, यानी कि कल या परसों वी वर डिस्कसिंग अबाउट ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग। ओवरफिटिंग इज आल्सो नॉट गुड, अंडरफिटिंग इज आल्सो नॉट गुड। मॉडल कैसा होना चाहिए? जनरलाइज होना चाहिए। ठीक है, तो ओवरफिटिंग, underfitting, I hope everyone should be doing. So, example, a loan prediction model maximizing accuracy may deny more loans to minorities if trained on biased lending history. अब एक बैंक है, उस बैंक ने क्या किया? उसके कुछ पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे वो क्या कर रहा है, लोन देना है या नहीं देना, वो डिसाइड करता है। Now, I have a question for you guys. आपको एक ऐसा मॉडल बनाना है जिसमें बैंक के लिए मॉडल बनाना है जो प्रेडिक्ट करेगा कि किसी इंडिविजुअल को लोन देना है या नहीं देना है, तो व्हाट वुड बी द इनपुट पैरामीटर्स या फीचर्स क्या क्या होंगे उस चीज के। सो दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट एवरीवन कैन। And finance. The policy was updated after a period of 34 years. The first education policy was drafted in 1968, followed by 1986. Under the chairmanship of Dr. Kasturi Rangan, a detailed 403-page bill was submitted in 2019 after discussion with some of the eminent faculty members from universities across India. The previous education policy stated access and equity. The latest education policy goes beyond that. It covers quality education, creative thinking, and catering to 21st century skills. By 2020. What are the basic problems? Education is not doing the mind without facts. We want an education by which character is formed, strength of mind is increased, the intellect is expanded, and by which one can stand on one's feet. The rich heritage of ancient and eternal Indian knowledge has been a openness, and let's go through each consists of two parts that are clear, but with the introduction of have an option of a bachelor's degree in IIM called NERU will set up. They will help set up the highest standard for multidisciplinary education across India. Assessment as per NEP 2020, continuous tracking of learning outcome, board exams to be flexible, assessment to focus on core concepts and skills, AI-based software to help track progress of students to make optimal career choice. Further will bring synergy between different board exams and self-assessment and peer assessment. The National Assessment Center Parag, which is performance assessment. This robot operates on a Bluetooth mode only, and this operates on a Wi-Fi and hotspot connections. These are the similar structure, but this is the metallic one, this is the 3D printed one. Diagnostic capacity. So on the base of the structure and application, we design all this. As you can see, it is a one filament
object. Like this 3D printer only uses one color. As there is a bamboo named Thank you, sir. Now I have the privilege of inviting Dr. Ashok Mathani sir to kindly address the gathering with his valuable words of wisdom. Please, sir. Principal sir, distinguished guest, enthusiastic participants, and all my organizing team. As we conclude this exceptional 6-day journey faculty development program on generative AI, it is with immense pleasure and pride and satisfaction that I present a concise and vivid summary of this 6-day workshop on generative AI. So I will start this 6-day journey with capital letters A to J. So let Good afternoon all. First, I would like to congratulate the entire team of IT Department, AISSMS Polytechnic for successful completion of this FDP. Special thanks to Principal Sir, HOD Ma'am and the coordinators, Guru Ma'am and Dr. Sonavne Sir. I was delighted to be the part of this amazing and very informative FDP. It made my week fruitful. The whole course was well planned, material was precise, and AI model discussed were easy to learn and use. Industry visit was awesome. We have updated ourselves to the innovative technologies and can definitely find myself in pace with the changing scenarios. Looking forward for more such kind of new and innovative experience from you all. Thank you so much. All the dignitaries on the dais and off the dais. I, Mrs. Anjali Khandavade, HOD IT Department, on behalf of Department of Information Technology, AISSMS Polytechnic, extend my sincere gratitude to everyone who contributed to the successful conduct of this AICTE 1 week FDP faculty development program on generative AI. We are especially thankful for inspiration Sri Malu Rajesh, Honorary Secretary, and all the SP management members of AISSMS Society for their constant support and encouragement. A special chief guest, Dr. Ashok Das, for being with us and sharing valuable thoughts. Our gratitude to Chief Coordinator Mr. S.K. Yasser, Principal AISSMS Polytechnic, for his dedicated guidance and outstanding leadership throughout the event. We are thankful to the expert speakers for sharing their valuable knowledge and to the faculty members who took part in this event. We would also like to sincerely thank all the head of institutes who granted the permission to attend this program, sparing you for attend this program, which helps you to enhance your knowledge and which will surely benefit you, your students in the future. We also thank Prusha Technology for building a valuable connection between the teaching faculty and the industrial technology. A special note of thanks to the AICTE Atal Academy for their sponsorship and continued guidance. I sincerely thank our event coordinator Dr. S.S. Sonavne sir, co-coordinator Mrs. R.B. Guru, and all my team members and everyone who helped directly or indirectly to make this event as a grand success. Thank you very much. So I kindly request everyone to please stand up for the national anthem.